Yeah, now it has started. So let's start with carboxylic acids. Okay? Although this topic in the combination of acids and esters completes the chapter, but we're going to do them separately. Starting with carboxylic acid, ये एक और homologous series है. As the name suggests, they're all acids. All of these acids have the functional group COOH, and if you remember the nomenclature part, we named them as OIC acid as in suffix in the end of their name, OIC acid. Just like ethanoic acid has the name part, which is OIC acid, okay, at the end of it, as you can see over here in the next heading. So OIC acid is the suffix for the names. The molecular formula of the first two members of the series are shown with their general formula in table on the next page. Okay, we're going to go with that. But first, the general formula, CnH2n plus 1 COOH. Now, this general formula is a little bit confusing and as well as different from the rest of the general formula for the homologous series we have studied. Now, considering the fact about alkenes, alkynes, alcohols, okay, the homologous series we have studied before. In all of these, carbon was not a part of functional group. This is the first homologous series in which carbon is also a part of functional group, which is COOH. So this is going to be the first carbon of the structure. And the rest of the carbons will be taken in this formula of CnH2n plus 1. Keep that in mind. Okay? This COOH is going to be the first carbon, and the rest of the carbon are supposed to be put in this part of the formula CnH2n plus 1. For example, if there is a carboxylic acid with 7 carbon atoms, then this is going to be the functional group COOH, and this Cn, the value of N would be 6, not 7. This N would be 6 because total number of carbon atoms were 7. One of the carbon atoms is part of the functional group COOH, and this N would start from 7 minus 1 is equal to 6. So this N would be 6, and hence this H would be 30. I hope you get the point. If anyone has a question, please ask. If not, we're going to go with a slight practice. Okay, it seems that you don't have a question. Let's start with practice. Ladies first. Let's start with Tanisha. Tanisha, tell me the molecular formula for a carboxylic acid in which there are only 2 carbon atoms. What would be the formula? The general formula is right in front of you. Number put करें, मुझे CnH2n plus 1 की जगह पे exact numbers बताएं. COOH तो हर formula में आएगा. जी तनीषा. Sir, 4. पूरा formula बताएं. CnH2n plus 1 COOH को सारे को replace करके numbers से फिर बताएं. The total number of carbon atoms in the structure is 2. तनीषा बेटा जो एग्जांपल मैंने सॉल्व किया वो समझ आई? आई थिंक मेरी वाली एग्जांपल आप क्लियर नहीं हुई है, मैं अभी समझा देता हूँ. देखिए हमारे पास जनरल फॉर्मूला है CnH2n plus 1 COOH as it is written right in front of you. So अगर हमारे पास let's suppose कार्बन equal to 7 है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? याद रखिए सबसे पहले आप COOH लिख लें. एक कार्बन यहाँ हो गया, बाकी कितने कार्बन बचे स्ट्रक्चर में? 6. So it would be C6 और H कितना होगा? 2 into 6 is equal to 12 plus 1 is equal to 13. So it says it is C6H13 COOH, the molecular formula for a carboxylic acid which has total number of carbon atoms is equal to 7. ये बात clear हो गई? निशा अब clear हो गया? अब आप अपने question का answer दें. What would be the formula for a carboxylic acid in which the total number of carbon atoms are 2? Next up would be CH4COOH. बेटा CnH2n plus 1 है, plus 2 नहीं है. और से करें. You need a correction in your formula. Come again, Tanisha. This time try to do it correctly. CH3COOH. Very good, Tanisha.
Vase, you're up next. Vase, you have a compound in you have a carboxylic acid in which total number of carbon atoms are 4. Yes, sir. So what would be the molecular formula? So C3 H7 COOH. C3H7COOH. Very good. Next up is Zyme. Zyme, what would be the molecular formula of a compound in which the total number of carbon atoms are 6? So C5H11COOH. Very good. Next up is Zoha. In fact, let's ask Zainab first. Zainab, Peter, you have a molecular formula to tell me if the number of carbon atoms in the structure are 5 in total. इसके बाद शाहजेब की टर्न है शाहजेब आपसे सबसे मुश्किल क्वेश्चन करेंगे ठीक है ना लेट्स सी इफ शाहजेब कैन डू इट it's going to be a little bit of challenging but it's going to be good जी ज़ैनब बेटा मेरी आवाज आ रही है Yes, sir. हाँ जी बेटा the total number of carbon atoms are 5 so what would be the molecular formula बिल्कुल जिस तरह से आपके सामने सॉल्व किया हुआ है आपके सामने जनरल फॉर्मूला आ रहा है जिस तरह बाकी गर्ल्स एंड बॉयज ने किया है उसी तरतीब से करें अगर नहीं समझ आया तो बेशक पूछ लें Sir, C4H7 and COH. The number of hydrogen are not correct. C4H7. How come 2 into 4 is equal to 7? You are also supposed to add 1 to it after. Hydrogens ठीक करें. C4 ठीक है. H कितना होना चाहिए 2n plus 1 के हिसाब से? Sir, 8. No. 2n. 2 से multiply करके 1 add भी करना है इसके अंदर. So it won't be 8. So 2 into 4 is equal to? Zainab, can you hear Sir, me better? 6. 2 into 4. Zainab बेटा क्या हो गया? Sorry, 2 sir. क्या हो गया इतने परेशान क्यों हैं 2 multiplied by 4 is equal to Sir, 8 होगा. plus 1 is equal to 9. हाँ जी so it should be C4H9COOH do you get the point beta Yes, sir. good Shazib this is the last question Shazib this is going to be a little bit tricky but try to do it on your own what would be the molecular formula if the number of carbon atoms in the carboxylic acid, total number of carbon atoms in the carboxylic acid is 1, just 1. फिर CH3 और फिर नहीं CH1OOH नहीं थोड़ी सी rearrange करें very good I am really impressed by your answer CH1OOH में नंबर 1 H के साथ 1 हम बोलते नहीं है अगर आपने CH लिखा है OOH वो तो ठीक है लेकिन इस तरह से बाकी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे और उनको फंक्शनल ग्रुप नहीं पता चलेगा तो COOH तो वैसे का वैसा ही रहना चाहिए जो आप एडिशनल इसके साथ अटैच कर रहे हैं वो चीज वो सबसे पहले प्रोनाउंस कर दें एंड में COOH as such pronounce करें and your answer is correct there are 2 hydrogen atoms 2 oxygen atoms and 1 carbon atom very good ये मुश्किल होता है स्टूडेंट्स के लिए but I'm impressed that you have done it right just इसे फॉर्मूला को रीएडजस्ट करें रीएडजस्ट करने पे क्या बनेगा अगर COOH का इकट्ठा होना जरूरी है
तो फिर सबसे पहले कौन सा अकेला आइटम रह जाता जो सबसे पहले लिखा जाएगा? Come on, try it again. You've done it right in the first time. just सिर्फ सर उसकी क्या पूछा अरेंजमेंट आपने? ठीक करनी है. मैंने ये कहा है कि आपने नंबर ऑफ आइटम्स बिल्कुल करेक्ट बताए हैं. There are a total of 2 hydrogen atoms, 2 oxygen atoms and 1 carbon atom in the structure. लेकिन शाहजेब, जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखते हैं तो हम उसके फंक्शनल ग्रुप को इंटरप्ट नहीं करते. ठीक है लोग, ये COOH हमारे सामने वैसे का वैसा ही रहेगा. ठीक है, हम एक सेकंड में इसे इस तरह से करता हूँ. ये देखें, ये COOH जो मैंने भी सिलेक्ट किया, ये एज सच रहना चाहिए फॉर्मूला में. इसे प्रोनाउंस करते हुए, बोलते हुए भी आपने इसी तरह बोलना है. ठीक है, उसी तरह जब हम जनरल फॉर्मूला लिखते हैं तो भी हम इस COOH को इसी तरह से मेंटेन करते हैं. उसी तरह से जब मैंने लिखा था तो मैंने भी COOH को मेंटेन किया. Now you are correct with the number of atoms, that there are going to be 2 oxygen atoms, 2 hydrogen atoms and only 1 carbon atom in the structure. That is correct. लेकिन अगर हमने COOH सारा इकट्ठा लिखना है तो सबसे पहला एटम कौन सा आएगा? कौन सा एटम है जो अभी भी बचता है फॉर्मूला में सबसे हाइड्रोजन. पहले? Very good. Then the total formula would हाइड्रोजन be, H2. नहीं, अब पूरा फॉर्मूला बताएं क्या होना चाहिए? HCOOH. Very good. Perfect. That's correct. बाकी क्लास को ये चीज समझ आ गई? Yes, sir. Good, good. ठीक है. So that means कि COOH हम अकेला फंक्शनल ग्रुप एक पूरा कंपाउंड नहीं बना सकते. शाहजेब ने ये बात बिल्कुल ठीक तरह से बताई है. मैं आपको इसे क्लैरिफाई कर देता हूँ. ये इस वजह से है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो हम एक्चुअली कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे. तो शुरू में एक हाइड्रोजन अगर अटैच हो जाए तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी इंक्रीज नहीं होते 1 से, और हमारे पास कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई हो जाती है, जैसा कि हमने यूजुअली इसे अल्कीन्स में, अल्काइंस में, अल्केन्स में, अल्कोहल्स में हर जगह पर किया है. ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर. अब आपको जनरल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना आ गया, सो आई होप यू आर नॉट गोइंग टू मेक अ मिस्टेक विद इट. सो मूविंग ऑन, जनरल फॉर्मूला को COOH लिखने की बजाय CO2H भी लिख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज में भी आप ऐसा कर सकते हैं. सो क्वेश्चन में CnH2n plus 1 COOH लिखा हो या CnH2n plus 1 CO2H लिखा हो, it doesn't make a difference. Moving on, studying about their physical properties. ये पैराग्राफ physical properties के बारे में. You may mark it or you may give a heading to it. ठीक है. The first 2 acids in the series are liquids at room temperature, and the first 3-4 acids are good enough for us. हम इतना ही करते हैं nomenclature के हिसाब से, और याद रखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में हम नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, और जो बाकी सारी चीजों में किया था होमोलोगस सीरीज में लेकिन हम यहाँ नहीं कर रहे, वो आइसोमेरिज्म है. कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आइसोमेरिज्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ IGCSE. ठीक, तो हम बाकी सारी चीजें करेंगे, आइसोमेरिज्म नहीं करेंगे. So although ethanoic acid will solidify if the temperature falls only slightly, ethanoic acid बहुत जल्दी solidify हो जाता है if the temperature reaches 8 to 10 degrees centigrade, which is usually a temperature in colder region parts of the world, specifically during the last months of the year. ठीक है, तो this temperature can easily solidify ethanoic acid. These acids dissolve completely in water to produce solutions that are weakly acidic. There are 2 acids at the top of this list. The first one is methanoic acid. It is present in nettle stings and ant stings. हमने इसे chapter number 5 में भी किया था. I hope you remember that. And ethanoic acid, which is also known as acetic acid, is a good part of vinegar, or known as acid of vinegar. Okay. Moving on to the next page, it would tell you the molecular formulas, the names, melting and boiling points. Of course, we are going to write the same thing. The melting point or the boiling point or the density increases down the group. उन्होंने melting boiling लिखा हुआ है, density आप खुद से ऐड कर लेंगे. Structures भी यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं. ठीक है, ये 2 structures जो हमारे पास दिए हुए हैं. Remember 3D मॉडल्स या बॉल एंड स्टिक मॉडल्स जो होते हैं, ये कलर्ड मॉडल्स, ये पेपर में नहीं आते हैं. दरमियान में जो हैंड स्ट्रक्चर्स हैं जो बाकायदा बॉन्ड शो करते हैं, these are important, and these structures have been a part of past paper way too many times. Methanoic acid, ethanoic acid, methanol, ethanol, इनके स्ट्रक्चर की ड्राइंग्स
बहुत ज़्यादा पेपर्स में आई हुई हैं और ये आपको 2008 से लेकर 2014 के पेपर्स के दरमियान सबसे कॉमन क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत रिपीटेडली आए हुए हैं, ठीक है। प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड के स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ हुए हैं, इनके फार्मूलाज, इनके स्ट्रक्चर्स भी हमारे कोर्स का हिस्सा हैं, ये भी आप करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं उसके बाद इनके रिएक्शंस पर, ठीक। तो बेटा एसिड्स को हम स्टडी कर चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में। I hope you remember that we had a topic back in chapter number 5 by the name of characteristic reactions of acids. उसमें हमने 3 characteristic reactions of acids study किए थे, ठीक है। Those reactions were, number 1, when an acid reacts with an alkali, it forms salt in water. उसकी example सबसे पहला reaction है यहाँ पर. Take a look. An acid can react with a base to form salt in water. So ethanoic acid plus sodium hydroxide gives us sodium ethanoate. So ethanoic acid के salts को हम ethanoate salts कहते हैं. Methanoic acid के salts को हम methanoate salts कहेंगे. तो it's very simple to name them, ठीक है. Plus it produces water, ठीक. Not just that, continuing with characteristic reactions of acids, उसमें हमने ये भी स्टडी किया था कि अगर ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे. उसकी एग्जांपल यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप लिखना चाहें तो मैं आपको वो लिखवा देता हूँ. लेट मी राइट इट ओवर हियर, ठीक है. We know that acid plus metal gives us salt plus hydrogen, ठीक है. This is something that we studied back in chapter number 5, ठीक है. In order to give an example for it, let's go with CH3 COOH as an example, and we are going to put a 2 behind it in order to balance it. And when we react it with magnesium, it gives us the salt, of course, which is in this case is going to be CH3 COO twice Mg, ठीक है, plus water, which in this case, in order to be balanced, is going to be 2H2O. Sorry, H2O. Just a second. Acid plus metal gives us salt plus hydrogen. My mistake. Okay, so acid plus metal gives us salt plus hydrogen. So 2CH3COOH plus Mg gives us CH3COO twice Mg plus H2. So this is a reaction. This is another characteristic reaction. The third one was acid plus carbonate gives us water plus salt plus carbon dioxide, which is the bottommost reaction at this page. Take a look. Calcium carbonate plus ethanoic acid reacts to form calcium ethanoate plus water plus carbon dioxide. Now, this specific reaction has a use written over here. Vinegar can be used as a descaler in hard water areas. That we studied back in chapter number 5. Ethanoic acid in vinegar reacts with lime scale, calcium carbonate producing carbon dioxide and dissolving the scale. We already know about that from chapter number 5. I hope that's clear. Any questions so far? No, sir. ये इक्वेशन याद करने हैं सारे. हाँ, ये क्वेश्चंस जरूर याद करेंगे. अगर इन इक्वेशंस में एसिड्स को, अल्कलीज को, मेटल्स को रिप्लेस करते हैं तो आपको खुद को इससे इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए. प्लस ये इक्वेशन यहाँ पे नहीं याद करनी है. इफ यू गो बैक टू चैप्टर नंबर 5, यू वुड सी कि ये तीनों इक्वेशंस जो मैंने लिखी हुई हैं यहाँ पर, ये तीनों चैप्टर नंबर 5 में ऑलरेडी हैं. तो मैं आपको कुछ नया याद करने को नहीं कह रहा. विनेगर को डिस्केलर के तौर पर हम यूज करते, ये भी चैप्टर नंबर 5 में दिया हुआ है. एसिड अल्कली आपस में न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट वाटर बनाते हैं, ये भी चैप्टर नंबर 5 में. सो एवरीथिंग ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड एंड एट द बॉटम रिटन बाय मी इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 5. बहरहाल अगर आपने वहां नहीं किए, यहाँ जरूर मेमोराइज करें. मेमोराइज नहीं कर सकते तो अंडरस्टैंड जरूर करें कि रिएक्शन को आप कंप्लीट करके बैलेंस कैसे करेंगे. ठीक है. well balancing practice हमने परसों भी की है, so I hope you're again good with that. ठीक. Can I erase the reaction written below? Yes. Are you done writing? Yes, sir. चलें, एसिड्स को और क्लास को दोनों को बाइंड अप करते हैं एक छोटे से पैराग्राफ के साथ.
Commercial descalars are based on weak acids, methanoic acid, for example, or on moderately strong acids such as sulfamic acid. It's the first time you're going to study this name. Why? Because this acid is a part of A-levels practicals. That's why we tell you the name of this acid. Even if you don't remember the moderately strong acid names like sulfamic acid, you should be able to memorize at least the first line of this paragraph that the commercial descalars are based on methanoic acid.